Hello friends, welcome to Target UPSC. Through my journey of clearing prelims 6 times and guiding more than 10,000 students, what I have realized is there are certain traits or certain common mistakes which are done by students. Because of that, they are not able to clear prelims. बहुत important है. एंड अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते हो तो नेक्स्ट 1 ईयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद नेक्स्ट 1 ईयर. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट 1 ईयर कोप अप नहीं कर पाते हैं एंड दे गिव अप ऑन देयर यूपीएससी प्रिपरेशन. सो प्रीलिम्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन योर यूपीएससी जर्नी. तो इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देम. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर यूपीएससी जर्नी. सो क्या क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो इन नेक्स्ट 90 डेज सो दैट यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग prelims by 5 times. To start with, one common mistake what students do in their UPSC preparation is they do not focus on what to read and what not to read. तो बहुत important है. They spend multiple hours and multiple days on reading ancient India and medieval India, though जिसका importance कम है, and they leave important subjects such as environment and science and technology. First and most important common reason is strategizing the subjects. तो ये एक important चीज़ है. Make sure you strategize important subjects, go through previous year's questions and see which subjects are important, and उस हिसाब से आप planning कीजिए. Medieval India, though it is more than 300 pages of old NCERT, but 1 से 2 क्वेश्चन के लिए it's not worth. But giving similar importance to science and technology, environment, economy is much more important. So strategizing what is right and what is wrong is important, and giving adequate time to the right subjects ये सबसे important चीज़ है. Second mistake what student do is there is lack of consistency. वो एक दिन 16 hours पढ़ेंगे, फिर अगले 2-3 दिन 3-4 घंटे पढ़ेंगे. So एक major reason है why students are not able to clear is lack of consistency in their preparation. There is lack of motivation. And जब आप imagine करोगे कि 11th 12th में या 10th में why you could score very much marks is because there was someone to monitor you, someone to push you to the limits. So सबसे important है there is lack of consistency and there is lack of accountability in their preparation. तो मैं चाहता हूँ कि there should be someone to ask you कि आज आपने क्यों नहीं पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, क्या पढ़ा है. तो there should be self motivation, self evaluation, self monitoring and self accountability so that you maintain consistency. Third important reason है why students are not able to clear prelims is they do not give test. As I say कि एक मेजर मिसकंसेप्शन है कि टेस्ट देना इज वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है. बट आई वुड कंसिडर दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, क्योंकि आपको फाइनली टेस्ट ही देने हैं. एंड जितना मिस्टेक्स आप टेस्ट में करते हो उससे रियलाइजेशन होता है कि आपने क्या क्या गलती की है पढ़ते वक्त. एंड टेस्ट से जो नॉलेज मिलता है, जो रिटेंशन पावर होता है, दैट इज मैक्सिमम. आप 1 घंटा टेस्ट दीजिए या 1 घंटा पढ़िए तो आपको रियलाइज होगा कि टेस्ट से आपको ज़्यादा रिटेंशन है. तो थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन वाई स्टूडेंट फेल इज दे डू नॉट गिव इनफ टेस्ट. फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज एग्जाम डे परफॉर्मेंस. एंड एग्जाम डे परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. 50% इज योर प्रिपरेशन एंड 50% इज हाउ डू यू परफॉर्म ऑन एग्जाम डे. हाउ डू यू हैंडल द एंग्जाइटी, वट आर द टेक्निक्स यू यूज टू हैंडल द MCQs, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको फोकस करनी है ऑन एग्जाम डे. अगर ये स्ट्रेस अगर आपने अच्छे से मैनेज किया तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बट एग्जाम डे में जाके पैनिक हो जाते हैं. सो मैनेजिंग दैट एग्जाम डे परफॉर्मेंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू फोकस ऑन योर एग्जाम डे परफॉर्मेंस. जितना आप प्रिपरेशन में टाइम देते हैं, एग्जाम डे परफॉर्मेंस के लिए आप रेडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. मूविंग फॉरवर्ड, और एक मेजर मिस्टेक है अमंग यूपीएससी स्टूडेंट्स इज दे लैक प्लानिंग. दे डू नॉट प्लान देयर प्रिपरेशन कि आपको 45 डेज में एक बार रिवीजन कंप्लीट करना है, नेक्स्ट रिवीजन शुड बी इन 20 डेज, नेक्स्ट इन 15 डेज. तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से सब्जेक्ट कितने दिन में पढ़ने वाले हो, तो ये प्लानिंग जब तक आपकी परफेक्ट नहीं है, देयर इज वेरी लेस चांस टू प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स एंड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. तो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड इन्हीं सारी चीज़ों को डील करने के लिए एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई आ रहे थे कि हाउ डू वी स्ट्रेटेजाइज दिस 90 डेज. एंड इसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए वी हैव लॉन्च अ संकल्प प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग प्रोग्राम, 90-day targeted prelims program, जिसमें we are going to give you video lectures on all the important topics of prelims, right from modern history, geography, environment, science and technology, and these are going to be crisp lectures along with CSAT and current affairs also. Secondly, there would be mentorship with respect to solving your problems, guiding you into the right direction, and there would be monitoring over your performance. Every week there would be 2 monitoring calls by our team to ask you whether you are preparing in the right direction, have you completed the targets. तो एक बहुत important program to give you targets to ensure right direction and also to ensure monitoring over your performance is the main aim of this important initiative. To
explain about Sankalp process, how the program is going to go. It is a 90-day program जिसमें हम weekly targets देंगे for next 45 days कि आपके per week आपको कौन सा subject पढ़ना है. उससे related हम comprehensive videos देंगे उन subjects में, so that daily आपको 1 से 2 घंटे videos पर spend करने हैं. And these videos are most comprehensive, covering both current and static part of that syllabus, so that there is quick retention and you get the best content. Along with it, we would want you to solve mini test to check your performance, and there would be follow-up call from our team to monitor whether you are preparing in the right direction or not, why you are not preparing. अगर आपकी कोई specific doubt है तो I will take your mentorship call to solve all your problems, to guide you in the right direction. Following this, there will be feedback from you, and this way we will be covering every part of the subjects, and there is a detailed schedule which we are uploading on our Telegram group. तो आप वेबसाइट पर भी जाके डिटेल शेड्यूल देख सकते हैं. तो हमने फर्स्ट 10 डेज में एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे. नेक्स्ट वील कवर मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. तो इस तरीके से टारगेटेड अप्रोच रहेगा. साइड बाय साइड वील गिव यू वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, देयर वुड बी मॉनिटरिंग कॉल्स ऑल्सो, एंड देयर वुड बी फोकस्ड ऑन ensuring right guidance and right mentorship. आपके जो भी डाउट्स रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, देयर वुड बी सेशंस ऑन MCQ सॉल्विंग टेक्निक, हाउ टू इंप्रूव एग्जाम डे परफॉर्मेंस, हाउ टू रिड्यूस एग्जाम डे स्ट्रेस. तो इस पर सारा फोकस रहेगा. अलॉन्ग विद देयर आर 2 सेशंस ऑफ रिविजन्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट इन दिस, सो दैट वी cover everything in a comprehensive way. The detailed schedule which we have made is there on the Telegram group. If you want to join this program, we are taking only 100 admissions, as mentoring and monitoring of more than 100 students is difficult. So we are keeping this super 100 batch limited to 100 students, where we are giving right content also, we are ensuring right mentorship also, and we are making sure that you're reading. There is a push factor. You're motivated to study for next 90 days, and there would be monitoring which is in the form of audit. So make sure, अगर आपका prelims सबसे बड़ा hurdle है, if you are not able to clear prelims and if your preparation is out of track because of COVID, make sure you join this session and give your preparation a new start, and we are sure that this session would be the most effective session in your prelims preparation. Hope to see you on the other side. Already 25 admissions हो चुके हैं, तो if you are interested, make sure go and join Sankalp program. The details are in the description box also. Old students have special discounts, so you can call us to get the coupon code, and rest remaining students can enroll from targetupc.in. Thank you.